an Indian, we are feeling very proud and we are best. चंद्रयान 3 के रूप में चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया चंद्रयान 3 मिशन चांद की सतह पर पूर्ण रूप से उतर गया है, जिस भारत की उपलब्धि पर निगाहें विश्व की टिकी हुई थी। आखिरकार उस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया है। ऐसे में भारत के चंद्रयान 3 की उपलब्धि को मनाने के चलते नेहरू साइंस सेंटर में एक आयोजित कार्यक्रम के दौरान फॉर्मर साइंटिस्ट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च प्रोफेसर एन वाहिया के साथ द ट्रू हंट ने की चंद्रयान 3 के संदर्भ में कुछ खास चर्चा, और साथ ही जानिए वहां मौजूद चंद्रयान 3 की उपलब्धियों को दर्शाते चंद्रयान 3 का मॉडल बनाते स्कूली बच्चों का क्या है कहना। First of all, बहुत namaskar, and I would start my question with Chandrayaan3. Sir, just in one-liner, today's movement of Chandrayaan3 for you. One more major landmark for India's long series of space achievements. Today is a big day, landing time of Chandrayaan on our moon. So I would like to ask you that the success story about Chandrayaan3, which is making proud every citizen of India today. So what would you like to say? So Chandrayaan itself is a great achievement. 7 or 8 countries have tried to go there, America and China and India. And India has successfully shown 3 times that we can reach the moon. The last time the lander had some technical problems, so this time ISRO has done a great job of perfecting that lander. And their confidence and their quality of technology is such that part of the mission will actually use the Chandrayaan-2 technology to communicate with Earth, which means their level of standardization and engineering was so good that orbiter put around moon 3 years ago is still in such a sufficiently good condition to talk to us and send us data. So it's a remarkable technological achievement. Today we will see the landing, and it will almost certainly be a successful one. ISRO has an excellent record of quality and delivery, and once it lands we will also have a rover, a little car to drive on the moon for 15 days before the sunset will kill it. But it's certainly a great achievement. Sir, I would like to ask you, of course, when something is sent on moon, it's for a mission. So for our layman citizens, what mission is all about and what the next step would be? There are a few things. So previous all missions that have gone to moon so far, which have landed successfully, have all been near the equator of the moon, and the equator of the moon is flat, so it's easy to land there. But now what we are attempting is right in the middle of massive mountain ranges, and therefore it is much more tricky, because as Russian Luna 25 showed, a slight error in landing will go means you go and bang into the mountain and you are destroyed, and therefore it will be a unique landing. That is why nobody has gone to the poles. It was Chandrayaan-1 that showed that pole is full of water. Now everybody wants to know about water on the moon, and so Chandrayaan-3 lander will be the first successful lander to land in an area which is rich with water. So we want to know the geography of it, we want to know the water content of it, we want to know the quality and quantity and everything, and Chandrayaan-3 will make a great contribution to that. Sir, Chandrayaan-3 has been talked about that it is very economically effective as well. What would you like to say on that? India is not a country as rich as, say, United States or something. So we have to economize on everything. That is why, for example, our rockets take 40 days to reach moon compared to Russian and American rockets which reach in 3 days. Because they use much bigger, much more powerful rockets. We don't use those powerful rockets. So we have to use the Earth as a slingshot, and all that takes time. But working with economy and yet succeeding to the same level as some of the great nations have reached is certainly a very impressive achievement. I would like to come on the hard work of our scientists, because behind every innovation there is a hard work, and especially of ISRO scientists. So what would you like to say on the years of research, years of hard work, then Chandrayaan-3 comes up after Chandrayaan-2? ISRO has a continuing tradition of research, and ISRO's history goes back to some 70-50 years. Nothing in ISRO happens without a planning of at least 10-15 years or something. So it is a lot of hard work, a lot of engineering challenges, because the problem with space is that once you send something there, you can't repair it. So ISRO has been perfecting techniques of making reliable space vehicles right from its first objective itself was to make reliable space objective. It makes space communication satellites which we don't even talk about because they become so routinely successful. So ISRO has a long record of great success, and partial failure of the lander on Chandrayaan-2 was a marginal failure against a very glorious record of success of 60-70 years of ISRO. So ISRO has always been one of our great achievements of India. Now I will talk about today's day, sitting at the Nehru Science Centre in Mumbai. Sir, what I could say in the layman words, a model of Chandrayaan-3 has been displayed by the students. What would you like to say on that, and what kind of
example it is setting for the young generation coming up? Visualization always helps, and it is good that these children have taken so much of hard work and put in so much of labor and care into designing a module, because it gives you a visual feel. Eventually human beings like to see things, and we can't obviously see the real thing, so it is good to have a model. I should congratulate the children for having done such a great job to help everybody visualize how big Chandrayaan is. Last words as a scientist yourself, motivational words to the growing India, to the young India and more innovative India. What would you like to say? India is going to grow on science, technology and innovations, and India is going to need many more scientists than we have today. We are going to need a lot of infrastructure, a lot of new technologies, a lot of new sciences, and we need young minds to do that. मेरा नाम जयेश प्रवीण पाटिल है और मैं हॉलीवुड इंग्लिश स्कूल से हूँ अंबरनाथ में, और हम नेहरू साइंस सेंटर को एक एक्टिविटी के लिए आए हैं, और हमारी एक्टिविटी था कि हमें एक मॉडल बनाना था चंद्रयान 3 का। तो हमने इधर बनाया है एक लैंडर, एक प्रोपोर्शनल मॉड्यूल और ये इसमें से निकलने वाला रोवर। ये था हमारा आज। तो चंद्रयान 3 जैसे आज देश के लिए एक बहुत गर्व की बात हो रखी है, तो ऐसे में चंद्रयान 3 के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे कि आप भी भारत का भविष्य हैं और अपने स्कूली पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ऐसे में साइंस से रिलेटेड ये मॉडल बनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे चंद्रयान 3 को लेकर? चंद्रयान 3 की लैंडिंग हमारे लिए एक प्राउड वाली फील होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 विल बी द फर्स्ट टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। इधर 16 डेज नाइट होती है और 16 डेज डे, और वो एक डार्क रीजन है, तो किसी ने भी ट्राई नहीं किया था। रिसेंटली रशिया ने ट्राई किया, लेकिन वो फेल हुआ ओवर स्पीड के वजह से, और अभी इंडिया उसमें लैंड करने वाली फर्स्ट रहेगी। चंद्रयान 3 उधर स्लोली लैंड करेगा और सर्टन पीएच टेस्ट वगैरह सॉइल के टेस्ट करेगा, और उधर मॉइस्चर का प्रेजेंस मीन्स वाटर फाइंड करेगा कि उधर वाटर है कि नहीं, एंड दैट विल बी द मिशन ऑफ चंद्रयान 3। और ऑफ कोर्स सबको उम्मीदें हैं कि वो सक्सेसफुली लैंड करेगा। ऐसे में आप एक स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के छात्र हैं, आपके लिए कितना निजी तौर पर कितना प्राउड मोमेंट है? मुझे जितना प्राउड फील हो रहा है एज ए इंडियन, ये बताया नहीं जा सकता, इतना प्राउड मोमेंट है। चंद्रयान 2 के लिए जनता जितनी एक्साइटेड नहीं थी उतना चंद्रयान 3 के लिए, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इंडिया। जस्ट लास्ट वर्ड, चंद्रयान 3 जैसा कि आप जानते हैं इसके पीछे इसरो के साइंटिस्ट की बहुत बड़ी मेहनत है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे स्कूली बच्चे होने के तौर पे, एक चंद्रयान 3 के मॉडल बनाने के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? कितनी मेहनत लगी होगी उन साइंटिस्ट को ये चंद्रयान 3 इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में? चंद्रयान 3 का जैसे हम बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसे हल्का बनाया गया है। मिशन मंगल में जैसे मंगलयान का बनाया गया था, कम से कम बजट में बनाया गया है, और जो चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी उनको सुधारने का प्रयत्न किया गया था। अभी हमने मॉडल बनाया तो हमें उसमें के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थे उसके बारे में पता चला, और इससे हमें पता चलता है कि इसरो के साइंटिस्ट लोगों ने कितनी मेहनत ली होगी चंद्रयान 3 को बनाने में।